Pakistan's resilience, the ability to adapt, absorb and assimilate threats, challenges in a very courageous and eyeball-to-eyeball way, where it shows that we, the people of Pakistan, 220 million, 32 million at birth of West Pakistan, and when we were East and West Pakistan, I recall in 1970, the major cyclonic floods that overtook the then East Pakistan, today's Bangladesh, where hundreds of thousands of deaths occurred. And in fact, it delayed our national general elections by 2 months, from October 1972 to December 7, 1970. Subsequently, we've gone through, in my opinion, that we've had constant droughts in some areas, floods. But the earthquake of 2005, October 7th or 8th, in Azad Jammu and Kashmir, perhaps in our part of the world, was unprecedented. We lost in one day nearly 100,000 people. And as Honorable Humayun Chughtai Sahib was saying, I didn't realize that all kinds of odd people were working. But I must say, the country, the state and the people and the government measured up to the challenge. Because despite all our handicaps, despite all our disadvantages as a society or as a nation, we are not as yet economically developed nation. We've been struggling all along to reach the heights as other countries have done economically. And if we look back at Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's speeches, where at different points, when he was a member of the Indian Legislative Assembly, he constantly talks about how the Muslims of India, given the opportunity, should meet the challenges. And I think, given the guidance of Honorable Imran Khan, we have met many of the challenges. Of course, we could always do much better. But as I said, given our material resources, our human resource, in times of emergency somehow rises to the occasion. We don't always rise to the occasion when we do things normally, but in emergency I find citizens of Pakistan, men, women, children, young people, have great vigor. They seem to have some kind of dynamism about them. And that is what gives to me a constant stream of thinking that one day Pakistan will be competing with the best in the world. It hasn't happened, yes, but when we can work together in an integrated form, in a composite form, as individuals who come, and when the emergencies are there, we measure up to the tasks. However, in a normal way of life, being a federation and having different geographic areas, different people, but a Muslim majority state, we need to meet those challenges on a daily basis as we do in an emergency. हुकूमत के जो रिफॉर्म एजेंडा है उसके अंदर इस सारी चीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए, आगे ले जाने के लिए एक एफर्ट हो रही है। एनडीए में तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ स्ट्रक्चर है, उसमें हमने पेंडेमिक्स के लिए जो उसकी एक्सपर्ट साइड है, जो एपिडेमियोलॉजिक साइड है, पब्लिक हेल्थ साइड है, उसको तैयार करना है। तो कौमी इदारा सेहत हमारा बड़ा एक माया नाज इदारा रहा है, लेकिन उसको अब उसकी अगली वर्शन में लेके जाने की ज़रूरत थी। तो एक नया कानून पास हुआ जिसमें उसके अंदर एक CDC, सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल जो है बनाया गया है। इसी तरह जो लेबॉरेटरी थी उसका पूरे एक इंस्टीट्यूट है। इसी तरह नेशनल हेल्थ डेटा सेंटर है। फिर वैक्सीन्स और बायोलॉजिक्स के लिए एक अलग सेंटर जो है वो तरतीब दिया गया। तो कोशिश ये है कि ये सारी जो कैपेबिलिटी है, जो पहला सी था, जो पहली काबिलियत हमने इकट्ठी करनी थी, उसको एक जगह, एक अंडर वन रूफ कह लें या एक इदारे के अंदर कह लें, इकट्ठा करने की कोशिश की गई है, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता अगर दीगर एपिडेमिक्स, पेंडेमिक्स और चैलेंजेस आते हैं तो कम से कम उसकी जो मेडिकल साइड है, जो एपिडेमियोलॉजिक साइड है, उसके लिए हम तैयार हों और वो तैयारी जो है वो काबिलियत और कैपेबिलिटी के बेसिस पे हो, और फिर वहाँ से हम अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत होती है तो दोबारा से ये कोऑर्डिनेशन और जिसे कहते हैं कोऑपरेशन का आगाज़ कर सकें। मैं समझता हूँ कि अभी तक हमें इसमें सक्सेस हासिल रही है।
لیکن کمپلیسنس بڑی بری چیز ہے. اور جب کبھی ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ اب ہم نے یہ بازی جیت لی تو پھر کئی دفعہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگلے آئندہ آنے والے چیلنجز جو ہیں ہمیں کہیں پریشان یا تکلیف میں نہ ڈال دیں. تو ہمیشہ تیاری رہنی چاہیے, اور پریپیئرڈنس جو ہے وہ کسی بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اسٹریٹجی کا اہم ترین حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوشش یہ ہم نے کی ہے کہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا جائے, اس کو مکمل طور پہ آئندہ کے لیے تیار کر دیا جائے, تاکہ آئندہ خدا نخواستہ ہمیں دوبارہ سے بھاگ دوڑ کے ایک NCOC نہ بنانی پڑے اور ایک بنا بنایا اسٹرکچر موجود ہو.